केंद्रित दृष्टिकोण पर आयोजित 3 दिवसीय भारतीय आर्थिक संघ के 104वें वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अतिथि गृह के बप्पा रावत स्वर्ण जयंती सभागार में पधारे आप समस्त अतिथिगण का मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिवार हृदय की अंतरतम गहराई से स्वागत एवं अभिनंदन करता है। Professor Ghanshyam N. Singh sir, Honorable President, International Economic Association, we are pleased to welcome Professor America Singh sir, Honorable Vice Chancellor, Mohanlal Sukhadiya University, Udaipur. A courteous welcome to Professor Ghanshyam Singh Ji Rathod sir. Thank you, sir. I request Dr. A.K. Tomar, sir, Chief Program Coordinator, IEA, to felicitate Professor G.S. Rathod, sir, Dean, University College of Science, MLSU, through parks and Obama. सर इधर देखिए सर आप Professor A.P. Pandey, sir, Director, National Small Industries Corporation and former Vice Chancellor, Manipur University, also the keynote speaker today. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
सेकंड पीछे। सर इधर सर। Thank you, sir. सोनारी धरती जठे मारो चांदी रो आसमान रंग रंगीलो रस भयो मारो प्यारो राजस्थान गोरी बैया में हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़िया, बैया पकड़ धरनी मेरे मोसे नैना मिला के, छाप तिलक सब The 104th Annual Conference of the Indian Economic Institution is being hosted by Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, one of the prestigious University of India, ranked 45th with the Outlook magazine as the public university and NIRF MHRD in 150 to 200 range in the country. One of the most preferred institutions for higher education, learning and research, creating scientific temper, maintaining high ethical values, the university has ensured overall socio-economic growth of all the sections of society by creating greater access and inclusive approach. It's an honor for the university to host the 104th Annual Conference. It has both been a pleasure and delight
also for the university, to welcome the Indian Economic Association. Atithi Devo Bhav, Agat Ka Swagat. The beauty of Indian culture, reverend guest as God. Welcoming guest has always been a festive and welcome occasion. I request Professor Hanuman Prasad Sir, Local Organizing Secretary, Indian Economic Association, 104th Conference. Respected President of Indian Economic Association, Professor Ghanshyam Singh, Dean, University Science College, Professor again Ghanshyam Singh, and the most respectable and most active Dr. A.K. Tomar Sahib. Please put your hands together. Friends, delegates, media persons, and all deans of the university, particularly I can see our own Professor P.K. Singh Sahib and Suryavir Singh Bhanav Sahib is present. My co-organizing secretary, Madam Neha Paliwal, Alpna Singh Madam, and my dear delegates. At the outset, let me thank Indian Economic Association for giving us this opportunity to host 104 annual conference in Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, which was established in the year 1962. Just like stock markets, few years it grows and then it remains for few years stable or little growth, and then it starts again peak. The university is also doing in the similar manner. University these days have attained just like an international university. Our Honorable Vice Chancellor, who could not be present here today because of his meeting at Jaipur, that is Vice Chancellor's conference, he could not attend this, but under his leadership, we have been doing extremely good. May it be the field of academics, may it be the field of society, social responsibility, may it be the field of sports, whatever you talk, everywhere, we have been doing excellent. We have been doing n number of activities. And in that series, as Professor Singh got the invitation from IEA, he immediately has accepted and has directed me to organize this 104. Let's 50,000 mass in the nearby tribal villages where we can understand that people cannot afford food, but we have distributed masks so that they remain safe. We have distributed, our Honorable Vice Chancellor, under his leadership, we have distributed 5,000 saris to the tribal village people. Apart from this, n number of actions have been done as far as the university has published around 3,000 research papers. The teachers, faculties of the university has published 3,000 research papers in last year. And this year, around 200 research papers have been published, and still people are working, and all these are in Scopus. And lot of citations papers have got. We have organized in one day 155 online webinars, 172. So that is how we have created even recording, organizing seminars also. And few more campuses are there. Maybe in Chittorgarh we are going to have another campus near Chittorgarh, Nimbaheda. We are going to have another campus to welcome you in Mount Abu Road. We are attempting under the leadership of our Honorable Vice Chancellor, America Singh Sir. Eminent industrialists and academician, I would say, Vivek Sir, his presence makes this that we have now we need to have now orientation towards industry also, and that reminds, his presence on the stage reminds us to think from that angle also, and therefore I welcome you, sir, in this program. Very well known to me. If there are more than 5 stars, I will put those stars also. And therefore I welcome you, sir. This
your presence in this program adds grace to this program, and welcome on behalf of Mohanlal Sukhadia University, sir. I would like to welcome our own Asthana Sahib, D.K. Asthana Sahib in this program, particularly A.K. Tomar Sahib, who have, Tomar Sahib is just, I think he is not on dais because chairs were less, but actually he is the one who is present in the dais, behind the dais, and he is the one who has led everything, all conversations. The association stands for promoting the interest of the discipline in terms of extension, expansion, and professional competence in teaching, training, research, and consultancy. आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। इतने ओजस्वी शब्दों में डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी ने जो इतना अपनी वक्तव्य कला का हमारे सामने प्रमाण दिया, तो मुझे तो लगता है कि मुझे बोलना ही नहीं चाहिए। सारी चीज़ें इसमें हो चुकी हैं, सबका सम्मान हो चुका है, सारी बातें बता चुकी हैं। लेकिन इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा, हम अकेले ही चले थे जाने मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो बहुत खूबसूरती से हमने इसको पाला, जिसके के हमारे संरक्षक डॉक्टर A.K. तोमर साहब हैं। मतलब हर लोग ने उनका नाम लेंगे क्योंकि वो ओवरऑल छाए हुए हैं डॉक्टर तोमर। तो उनके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, उनकी हिम्मत देने के साथ साथ हम लोगों ने ये कार्यक्रम यहाँ आयोजन किया। जैसा कि अभी बताया कि इट इज एन ओल्डेस्ट एंड द रिचेस्ट, ओल्ड एंड द बिगेस्ट एसोसिएशन ऑफ द इंडिया। साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी ही इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का नंबर आता है, जो कि 104 साल से हम लोग कर रहे हैं। बहुत सालों से हमने इसमें वृहद वटवृक्ष की तरह से हमने इसको पसंद और पतझड़, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, और आज अपने इस स्वरूप में है कि हम सब यहाँ पर इस संस्था की में आपके सामने उपस्थित हैं। इस संस्था में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, रिजर्व बैंक के गवर्नर, बहुत से मिनिस्टर और राज्यपाल इसके हमारे मेंबर, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी विद्वता के साथ, अपनी योग्यता के साथ इस संस्था को बहुत आगे तक बढ़ाया। हनुमान जी ने कहा कि हम लोग अब उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। हमारी जो तेजस्विता है या हमारे जो अपने प्रति लगन है सब्जेक्ट के प्रति, इसलिए हम कोविड में कर रहे हैं। और जैसा कि बताया कि 104वीं कॉन्फ्रेंस से हम लोग बराबर से कॉन्फ्रेंसेस अपने करते आ रहे हैं, और कोविड काल में भी हमने अपनी कॉन्फ्रेंस बंद नहीं की। ऑनलाइन और ऑफलाइन तरह से हमने उसको प्रोग्राम किए, ऑनलाइन किया, और इस बार भी हम, मुझे फख्र है कहते हुए कि इस बार भी हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में एक कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिसके के लिए यहाँ की टीम, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की टीम जो है, बहुत बहुत बधाई के पात्र है कि उन्होंने सब इतना सब दिल्ली किया हुआ है। मुझे खुशी है कि इस कॉन्फ्रेंस में का जो सोवेनियर है, जो इस कॉन्फ्रेंस में पेपर्स हम लोगों को आप लोगों ने भेजे हैं, रिसर्चर्स ने भेजे हैं, जो अपने प्रेजेंट अपने आने वाले सेशंस में करेंगे, उन सब के पेपर्स को इकट्ठा करके एक सोवेनियर के रूप में आज ही हम उसको रिलीज करने जा रहे हैं, जो हमारी इस कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कम से कम इस यूनिवर्सिटी वालों को तो ताली बजाना चाहिए था। जो इनकी पावर है, जो एनर्जी है, ये हमेशा सब जगह आराम से खड़े रहते हैं। और पिछले 3 दिनों से तो मैं देख रहा हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक एक ही ड्रेस में वैसे ही लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक। सारी टीम को, सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस की अगर सफलता का श्रेय अगर किसी एक आदमी को दिया जाएगा तो वो डॉक्टर हनुमान सिंह। भारतीय आर्थिक संघ के 104वें वार्षिक सम्मेलन के बारे में सामान्य जानकारी हेतु कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर A.K. तोमर साहब से अनुरोध। हम लोग उदयपुर में इस कॉन्फ्रेंस को करने जा रहे हैं, और मैं इस सब के लिए यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं, यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, यहाँ के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन सब का, और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का आभारी हूँ कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दिया कि हम यहाँ आ सके, और हमारे देश भर से जो हमारे डेलीगेट्स हैं, हमारे EC मेंबर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, आ सके। और हमें आज एक मौका भी मिला है कि हम हमारे सम्मानित वरिष्ठतम साथी प्रोफेसर श्री प्रकाश जी को आज यहाँ पर ऑनर किया जाएगा। उनको अटल बिहारी वाजपेयी अवार्ड, जो कि इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन ने 2018 में शुरू किया, और फर्स्ट अवार्ड जो है वो रमेश कुमार जी, जो नीति आयोग के मेंबर हैं, उनको दिया गया था। तो उसी क्रम में आज सर को भी ऑनर किया जाएगा।
जहाँ तक उसकी थीम की बात है तो उसकी जो तीन थीम हैं वो एक है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, जिस पे की डिस्कशंस होंगे, पॉवर्टी एलिवेशन थ्रू डिजिटल एप्लीकेशंस, और थर्ड है कोविड-19 एंड इंडियन इकोनॉमी। तो कोविड तो फिर से आ गया है, तो हम समझते हैं कि रिलेवेंट है बहुत ही, और इसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब ने हमें ये कहा था कि कोविड पर जो है अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं पूरे वर्ल्ड वाइड हैं। इसी उसमें क्रम में 4 सब थीम भी सजेस्ट की गई थी। नंबर 1 था इसमें एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड ट्राइबल इकोनॉमिक्स। सेकंड था आत्मनिर्भर भारत। थर्ड है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन ग्लोबल एंड लोकल इकोनॉमी। और फोर्थ वन था डिजिटल रेवोल्यूशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो इस तरीके से ये 4 सब थीम रखी गई हैं। तो इस तरह 3 थीम तो मेन हैं और बाकी 4 जो हैं सब थीम्स हैं। और इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तो सभी लोगों को मालूम हो वैसे कि जो हम लोगों ने शुरू किया 2018 से, कि हम लोग बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड्स देते हैं फॉर यंग इकोनॉमिस्ट को। तो इसमें जो है 4 अवार्ड्स तो हैं रिसर्च स्कॉलर्स के, स्टूडेंट्स के, और 4 अवार्ड्स हैं जो कि बिलो 40 ईयर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए हैं। और इसके अलावा जो बेस्ट पेपर होगा कॉन्फ्रेंस का, उसको डॉक्टर आशा सब लोग गोल्ड मेडल अवार्ड दिया जाएगा, जो कॉन्फ्रेंस में बेस्ट पेपर होगा। इसके अतिरिक्त जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल अवार्ड जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिसर्च के उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए भी दिया जाना 2018 से शुरू हुआ है। तो इस तरीके से ये आज 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है, इसमें ये थीम्स पे चर्चा होगी, परिचर्चा होगी और एक्सपर्ट अपने वो देंगे, वक्तव्य देंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप सबके रहने से ये कुछ अच्छे सजेशंस मिलेंगे, कुछ अच्छे उपाय मिलेंगे। तो हम तो गिलहरी जैसा योगदान इसमें करने वाले हैं, मैं समझता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Journal is being published by Samajik Arthik Vikas एवं शोध संस्थान. The Sansthan is a major education and research organization providing platform for development programs in different subjects like economics, sociology and social sciences. The organization has been connected with child labor, rehabilitation, ecology, agriculture, educational and research activities for the past 18 years. I request the respected dais to kindly release the Savas Journal of Social Sciences. श्री विवेक सिंह साहिब से उद्बोधन का सादर अनुरोध। First of all, I am honored and extend my sincere thanks to the organizing committee for inviting me as a special guest for the 104 annual conference of Indian Economic Association to be held at Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, Rajasthan from 27 to 29 December 2021. I am overwhelmed and it's truly a privilege to be a part of this event. I am aware of the fact that Indian Economic Association has been significantly contributing towards the modernizing rejuvenation of our Indian economy through suggesting various operational and functional activities. Economic reforms to be implemented in coordination with the concerned ministry and government officials. Also, their active and sincere members have continuously been writing rich articles, creating awareness and presenting motivational contents in the journals, magazines, newspaper and other modes of communications. I strongly believe that specifically the Indian Economic Association's members should meet government officials on priority basis to figure out critical economic conditions of the country resulting out of COVID-19, leading to great financial and economic disturbances happening in all walks of life. On behalf of Arni University family, I extend my best wishes to the team of Mohanlal Sukhadia University, and I pray to Almighty to bless Indian Economic Association and its member in achieving new milestone.
The dignitaries on the dais are requested to kindly release the souvenir having abstracts of research papers to be presented during the conference. Neha Paliwal madam, please come. Swati, Professor Swati. Swati and team. सर इधर एक सेकंड आप टीम आओ ना, टीम एलएमएस आ जाओ एक बार। Into an opportunity towards a more sustainable and inclusive path of economy. I request Professor D.B. Pandey sir, former Chancellor, Manipur University. Honorable Professor Ghanshyam Singh ji, Chairman of this conference, Professor A.K. Tobar Sahab, his Chief Program Coordinator of the conference, Professor Hanuman Prasad Singh ji, Dean, Management Studies, and Professor D.K. Asthana Sahab, General Secretary of this conference, Dr. Vivek Singh ji, Chancellor of Aaroni University, Professor Mandhani Manoj. It's my pleasure to be here on the land of Surveers, the great memory of Maharana Pratap, who inspires the whole India as well as the whole world to be the great freedom fighter. So this place is very important with the point of view of history, as well as it is inspiration for the youth and other communities also. मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में, तो वहाँ पर ये अक्सर होता था कि वास्तव में हम किसे याद करेंगे, तो मुझे याद है कि कविता हम लोग पढ़ाई जाती थी, चट चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सबल जवानी को। इन कविताओं से रोमांच हो जाता था। और वो ये धरती है और ये विश्वविद्यालय है जो इस तरह के सूरबीरों की गाथाओं पर आधारित आदर्शों से बनी है। तो आज के इस कोरोना के काल में आप इस कोरोना के आतंक को मिटाने के लिए, जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम इस आतंक को मिटाने के लिए एक नई दिशा देने जा रहे हैं, तो मैं इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजर्स को, उसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। पुनः आपको बहुत I request the respected dais to kindly release the 3 books authored by Dr. Manohar Mulund sir. A Crusade Against Corruption, Neutral Path, A Dialogue on System Change and Invitation to Make New India, व्यवस्था परिवर्तन, एक विमर्श, एक पहल नए भारत की रचना। सर आगे Thank you. The distinguished dignitaries on the dais are requested again to सर इधर अर्थशास्त्री प्रोफेसर शिव प्रकाश साहिब के प्रशस्ति पत्र का वाचन करने एवं अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार की उद्घोषणा का आग्रह। It's my pleasure
and I feel honored Bihari Vajpayee Memorial Award. And it is conferred to known economist sit on the dais, Honorable Dr. Shiv Prakash Ji. He has developed both theory and models of educational expenditure with application to Indian data. He is among about a dozen econometricians. His study on literacy and development is a significant contribution to the subject. He successfully guided 28 PhD and 12 MPhil scholars. He has been visiting professor at various foreign universities. He has contributed many papers and chaired sessions at several international conferences. He has been consultant of UNICEF, UNESCO and World Bank. His last 3 books are Theory of Consumer Behavior, Dynamics of Underdevelopment of Uttar Pradesh, Public Expenditure and Growth, a comparative study of India and Tanzania. Dr. Shiv Prakash worked as a secretary, Input-Output Research Association India, member of EC IIOA Vienna, Vice President, Northeast India Geographical Society, member governing body, Northeast India Council of Historical Research, member Task Force Planning Commission Regional Agricultural Development, expenditure on education, invitee to Financial Commission for the allocation of funds to education, Director Long-Term Land Use Project Planning Commission. He is an awardee of Kautilya Award of UPUEA. UPUEA means UP Uttarakhand Economic Association, and J.K. Mehta Award for Research and Teaching. This august gathering of academicians is privileged to honor you, sir, with its coveted award named after Bharat Ratna, late Shri Atal Bihari Vajpayee, our former Prime Minister of India. Congratulations, Dr. Shiv Prakash sir, from the August gathering of Indian Economic Association. सर आप भी पीछे सर ऊपर आ जाइए आइए इधर ही आइए हमेशा आपके साथ हैं आइए सर यहाँ मैडम आप भी हाँ मैडम सर खड़े होकर बहुत ही स्टैंडिंग इनोवेशन मिलना चाहिए। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। कवि शिवमंगल सुमन की इन पंक्तियों के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार से नवाजे गए प्रोफेसर शिव प्रकाश साहब, सीनियर प्रोफेसर अर्थशास्त्र, नोएडा से। देवियों और सज्जनों को सादर प्रणाम, अभिनंदन, मंगल कामनाएं, नव वर्ष की भी शुभकामनाएं। लेकिन छात्र छात्राओं और युवा शोधकर्ताओं को शुभ आशीष। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि क्वीन विक्टोरिया ने 1857 की क्रांति के बाद मैकॉले को भारतवर्ष में इसलिए भेजा कि इस तरह की क्रांति फिर से भारत में ना हो पाए। और मैकॉले ने एक बृहत डिस्कशन अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि अगर यहाँ की संस्कृति, भाषा और धर्म को नष्ट कर दिया जाए तो
सुदृढ़ हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य। कि यहाँ मुझे दर्शन हुए मानसिक दास्ता से थोड़ा सा ऊपर उठने का। कई लोगों ने हिंदी में अपने विचार प्रस्तुत किए और 17 देशों की यात्रा के बाद मैंने जो सीखा, जापान में जो जापानीज प्रोफेसर हैं वो अपने शोध पत्र जापानी लैंग्वेज में प्रस्तुत कर रहे हैं और उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो रहा है। ईरान में पर्शियन में प्रेजेंट हो रहे हैं पेपर और इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो रहा है। बुडापेस्ट में इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो रहा है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज में हो रहा है। अद्भुत लगा वह यह कि एक चाइनीज़ प्रोफेसर बीजिंग में 2005 में बोला मुझे अंग्रेजी आती है लेकिन मैं अपना शोध पत्र चाइनीज़ में ही प्रेजेंट करूंगा और खुद ही उसका ट्रांसलेशन करूंगा। ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स, इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमिक्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बड़ा ही कठिन ये कॉम्बिनेशन माना जाता था और मैथमेटिक्स और इंग्लिश लिटरेचर लेने वाले सिर्फ 5 कन्याएं थीं और 10 छात्र थे मेरे साथ पढ़ने वाले। तो मुझे गोल्ड मेडल भी मिला लिटरेचर में, टॉप किया जनरल इंग्लिश में और इंग्लिश लिटरेचर में भी। लेकिन दोस्तों ने कहा यार इंग्लिश में एमए करेगा तो जॉब कहाँ मिलेगा, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी भी जाएगी, तो जॉब की भी ज़रूरत थी क्योंकि मेरे पिता तो मैं 3 वर्ष का था तभी स्वर्गवासी हो गए। इकोनॉमिक्स ली। दूसरी बात जो एक महत्वपूर्ण मैं इस एसोसिएशन के बारे में कहना चाहूँगा वो ये है कि इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन HS जेवंस, हेनरी स्टीवेंस जेवंस ने 1914 में स्थापित की। उस समय वह अर्थशास्त्र विभाग में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर और हेड थे। उसी के साथ साथ द इंडियन जर्नल ऑफ, आई विल शेयर माई इंटरनेट नंबर, मेल ID and I will be looking forward to get and I will like to make a simple suggestion to this gathering of learned persons at the dais as well as please institute a memorial lecture to remember the founder of Indian Economic Association, HS Jevons. Then I will like to also suggest institute a memorial lecture, P.R. Brahmanand Memorial Lecture. Already there. That is already there. Oh. This time also. I am coming to the next 2 persons. Professor P.N. Mathur, first Indian economist to have been appointed professor of economics in any European or US economy. He was commended for Nobel Prize twice, but he could not get it. That is different. And third is Jagdish Bhagwati Memorial Lecture, if you already have. And I can tell this audience that I will try to mobilize certain level of funds for the institution of P.N. Mathur Memorial Lecture through the good offices of his relatives, myself and his scholars. Thank you very much. मैं अनजाना सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूँ। मैं अनजाना सा विहग विश्व के नभ में उड़ना सीख रहा हूँ। पहुँच सकूँ निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पद दो, पर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। इन्हीं पंक्तियों के साथ ही अत्यंत विनम्रता के साथ अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु प्रोफेसर अमेरिका सिंह साहब, माननीय कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से अनुरोध। For all of us, that Mohanlal Sukhadia University of Udaipur, Rajasthan has been provided an opportunity to host the 104th annual conference of the Indian Economics Association
with special focus on Bharat-centric approach to economic development post-COVID lessons. Honorable delegates from different parts of the country, Chair of the Conference, Professor Ghanshyam Yan Singh, Honorable President IA, Professor G.S. Rathore, Dean Science College, Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, keynote speaker, Professor A.P. Pandey, Director, National Small Industry Corporation and former Vice Chancellor, Manipur University. Special guest of conference, Professor Sri Prakash, Senior Professor, Economics, Noida, Professor Bhagirath Singh, Vice Chancellor, Pandit Deen Dayal Upadhyaya, Shekhawati University, Sikar, Mr. Vivek Singh, Honorable Chancellor, ARNI University, Dr. A.K. Tomar, Chief Program Coordinator, IEA. It gives me great pleasure to welcome you all in this 104th Annual Conference of Indian Economics Association. We are truly honored by this impressive array of panelists and speakers, which include eminent research economists from here and around the country. I thank the organizers for providing this opportunity to us, and I feel delighted to be part of it, and we hope for many such collaborations in future. It is a huge multi-faculty state university. संकल्प शक्ति के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना, चाहे जितने तूफान आए कदम एक न डिगना। असफलता के सागर से तुम अपनी नाव उबारो, अंधकार से डरना क्या, बस एक दिया तुम मारो। इन्हीं पंक्तियों के साथ प्रोफेसर घनश्याम सिंह जी राठौड़, अधिष्ठाता विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर से अध्यक्षीय उद्बोधन का सादर आग्रह। Very good afternoon to you all. Since we have already consumed more time which was assigned to us, so I have to confine myself within a few words. It's a great pleasure for us that the Mohanlal Sukhadia University is hosting the 104 Annual Conference of Indian Economic Association based on the theme Bharat-centric approach to economic development, post-COVID lessons. It's my privilege to welcome you all on the behalf of our Honorable Vice Chancellor, Professor America Singh. Without his blessings, our academic journey is absolutely incomplete. He is the patron and chief motivator to organize such academic events. Due to his, we all know that due to his already pre-assigned or occupied event at the Raj Bhavan, he could not present personally, physically himself in this conference. On the behalf of our Honorable Vice Chancellor, I welcome the President of Indian Economic Association, Professor Ghanshyam N. Singh, keynote speaker, Professor A.K. Pandey ji, former Vice Chancellor, Manipur University, presently Director of National Small Industries Corporation, Professor Sri Prakash ji, Senior Professor of Economics, Noida, and we have already gone through his contributions in the economics area. Shri Bhagirath Singh ji is not available here. Mr. Vivek Singh ji, Vice Chancellor, Arni University, Professor Nursing from Lucknow. I would like to also welcome to Dr. A.K. Tomar ji, Chief Program Coordinator of our association, and Dr. A.K. Asthana ji, Secretary General IAE. I also welcome to participants of this conference who are here in Udaipur to make this conference successful and to share their works, views, and research contributions in the technical sessions. And I also, thanks to all
who are presently available on online mode. I believe that the deliberations of this conference will certainly put a landmark on the economic development having a Bharat-centric approach, especially on the post-COVID lessons. I welcome to all dignitaries who are sitting over here in front of us on the dais, so over the dais, before the dais, and our senior professors and my colleagues, Professor P.K. Singh, Professor Bhanawat, Professor Seema Jalan, and Dr. Sachin, who has just now completed or organized a very good conference of the international level. And we should clap him, give him a clap. I congratulate to the leaders of this conference, the one and one all, Professor Hanuman Prasad, who is my colleague and my great friend, and Director of MS, who is also taking care of you all participants in this guest house also. He's also looking after the this guest house and your Adam arrangements also. We must clap him. And we must clap her for his encouraging efforts. I am thankful to all the organizers and officials and office bearers of this association who provide me an opportunity to be a part of this function. And you have applied the economics to just organize this conference at Udaipur in this best period of time in the month of December. You have justified that the economics persons are very caring about the economics and like that. Okay, thank you all. Thank you. All over the world, people are waking up to a new reality, to how big we really are, to how little control we really have, to what really matters, to love. So we pray and we remember that, yes, there is fear, but there does not have to be hate. Yes, there is isolation, but there does not have to be loneliness. Yes, there is sickness, but there does not have to be disease of the soul. Yes, there is even death, but there can always be a rebirth of love. Today, breathe. Listen behind the noises of your panic. Open the windows of your soul. And though you will not be able to touch across the empty square, sing and listen. The birds are singing again, the sky is clearing, and the spring is coming. And with these beautiful lines of hope from Lockdown by Brother Richard Hendrick, I courteously request Honorable President, Indian Economic Association, respected Professor Ghanshyam Singh sir, to kindly address us with the chair address. With visual presentation for 13 minutes or 15 minutes, we have seen just now. I know your patience and I know your impatience also. I appreciate your patience that in spite of the fact that time has gone past, you are there. But I will take just 60 minutes that has been allotted to me. But in that, I simply request you, don't be impatient and go out of the red. I think because I will speak out all that I wish to speak. I would have spoken in 1 hour and so. First, my address is my persons sitting on the dais, my friend Avi Pandey and his dynamic political activist wife, they are sitting in the podium, Mr. Rathore, Dr. Rathore, Dr. Vivek Singh, and my long-time friends, yes, what we call Sri Prakash ji. Time has gone. We must express thanks to our friend Sahab Singh, who has been always a strength to me, Nursing from Lucknow, who has been also a strength for me, and various persons from other parts of the nation. And it is because of that only that the scholars, young scholars, and senior teachers from all over the country have come here to attend this conference. Well, what we call our local organizing secretary has already shared something about how this system, how Arman and Shaji has said that how they have done it. In last yesterday,
I met with the Vice Chancellor, having interaction with him for a few years. He gave round to the campus, and I found how managerial skill and how the efficiency this Vice Chancellor has, that he has this, though the university is more than 6 decades, but still he did miracle in more than nearly 2 years of his term. That translation of the fact into the reality is a very important thing that we must appreciate. And I think we all owe great to him, and we should give a hand to the university and all the team who are working so hard to manage the things in that light. Well, so far as the Indian economy is concerned, I must say that this time, for last few years, academic has been the great casualty. Presidential speech and others used to be the theme of the conference. But the presidents have to spell out as to what he has to say without having a spelling what they want to say in details. This time I wanted to address on the issue of global warming, climate change and ecosystem. My written speech will be delivered both by online or by the visual also, printed form also. That will come later. But I must say one thing, that we must be very attentive from future as to how best we can manage, because our Aligarh team under the guidance of Tomar, our secretary D. Shasthana, Induji, Alam has taken the soldier of the department and very efficiently, and I think they should take precaution that academics should not give the last chance to speak their mind. I should give a hand to this Aligarh team of economists who are doing very well, and because of their effort only we could manage to make this conference perfect. This university is one university who has not only supported our case, but who has also taken all pains. Even the Vice Chancellor is taking all the time, talking with me. We were talking with the Governor of Bihar. We wanted him, he given the consent also, but because of the Chancellor of his some problems there, that everybody, media people know, that it was very incommunicable. He was not communicable there because his principal secretary also gone on day. So I was in a very embarrassing situation to say that the governor of Bihar agreed to come earlier, but because of that situation, he could not come. Still, I understand his wishes is there. I will convey him as to how best we have. वार्षिक सम्मेलन की अविस्मरणीय चिर स्मृतियों को मन में चिरस्थायी रखते हुए प्रोफेसर मीरा माथुर मैडम से अनुरोध है कि वे प्रोफेसर घनश्याम एन सिंह साहब, अध्यक्ष भारतीय आर्थिक संघ को स्मृति चिन्ह एवं फेस शील्ड भेंट स्वरूप प्रदान करें। आइए, इधर आ जाइए, या मैं आ जाऊं? नहीं सर, चलेगा। Thank you. Should I get it right now? Yes. Good. Thank you very much. सर से आग्रह है कि वे प्रोफेसर GS राठौड़ साहब को स्मृति चिन्ह एवं फेस शील्ड भेंट स्वरूप प्रदान करें। थैंक यू सर। प्रोफेसर सीमा चावला मैडम से आग्रह है कि वे प्रोफेसर AP पांडे साहब को स्मृति चिन्ह एवं फेस शील्ड भेंट स्वरूप। प्रोफेसर सीमा चावला मैडम, मेंबर ऑफ बॉम, FLSU उदयपुर। थैंक यू मैडम। नेहा पालीवाल मैडम से अनुरोध है कि वे प्रोफेसर श्री प्रकाश साहब को। थैंक यू मैडम। डॉक्टर नंदिता। थैंक यू मैडम। हनुमान प्रसाद साहब को स्मृति चिन्ह एवं फेस शील्ड भेंट स्वरूप प्रदान करें। Dark indeed, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, miles to go before I sleep.
I request Dr. Neha Paliwal Madam, Co-Organizing Secretary, Department of Economics, University College of Social Science and Humanities, Mohanlal Sukhadia University, to convey the vote of thanks. Maybe it is good afternoon now. Knowledge is like money, and to be of value, it must circulate. The 104th Annual Conference of Indian Economic Association is organized to spread the ideas and experiences, to deliberate and discuss on the Bharat-centric approach of economic development and to deal with the issues of global warming, poverty, elevation and COVID-19 impacts. I feel honored and privileged to get the opportunity to organize this conference and to propose the vote of thanks in the inaugural ceremony of this conference. First of all, I want to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor America Singh Sir, who is chairing the session, for accepting the challenge to organize this conference. It is his zeal and consistent motivation which make this event happen. Sir, we want to thank you for your immense support and guidance to make this conference successful. Under your efficient leadership, the university is flourishing and we are hoping to set the limits beyond the sky. My heartfelt thanks to revered Professor Ghanshyam Singh Ji, the President of IEA, for selecting our university and providing us with the opportunity to organizing this significant academic event. Sir, your experience and dedication are behind the continuous conduction of annual conferences of IEA successfully. So thank you very much, sir. I want to thank respected Professor Ghanshyam Singh Rathore, sir, the Dean University College of Science, who despite of many administrative engagements devoted his precious time to this academic gesture and graced the ceremony with his presence as the chair of the session. On behalf of Mohanlal Sukhadia University, I convey my regards and hearty thanks to Professor A.P. Pandey sir, the keynote speaker of the session, to deliberate in the coming sessions of the conference. I would like to congratulate and convey my heartfelt thanks to Professor Sri Prakash Ji, who has been conferred the Atal Bihari Vajpayee Eminent Economist Award for his contribution in the field of economics. Sir, you have graced the occasion with your presence. My special thanks to Honorable Professor Madhurima Lal, Professor Halima S. Rizvi ma'am, Professor Syed Murtaza Rizvi sir, Professor Alpana Kateja ma'am, Professor Prahlad Kumar, Dr. M.A. Beg, Professor Jagdish Narayan, and for I apologize if I have forget some names. So I like to thank all these resource persons because without them this conference is not possible. And I want to thank IEA officials, respected Dr. A.K. Tomar, Dr. A.K. Asthana, Madam Indu Varshane, for wonderful cooperation and for providing the constant support and guidance to organize this event. Atal Bihari Center for Entrepreneurship, Small Business and Skill Development, FMS, for providing financial assistance for organizing the 104th Annual Conference of Indian Economic Association. My thanks to faculty members, university administration and senior faculty members, the deans, the directors, Professor P.K. Singh sir, Professor Shurveer Bhanawat sir, Madam Seema Jhalan, Madam Meenakshi Jain, Sachin Gupta and other senior faculty members of FMS, Professor Anil Kochari sir, Professor Meera Mathur ma'am, and my colleague of Department of Economics, Dr. Deepa Soni in charge head, Ms. Vinita Rajpurohit, Ms. Anita Zoya, Mr. Mukesh Kumar Meena, for their assistance and advices in organizing the conference. My heartfelt thanks to Dr. Alpana Singh, Dr. Kumud Purohit and Dr. Tamanna Soni for comparing this inaugural ceremony very nicely and beautifully. I want to thank Dr. Avinash Pawar, Director of Computer Center and STEAM, Dr. Monica Varshane, for providing the technical assistance. And a big thank to the men behind this show, respected Professor Hanuman Prasad sir, the local organizing secretary of the conference. Due to his sincere efforts, great enthusiasm and efficient management, the conference has come into the present shape with a very short span of time. I would also like to thank and give a big round of applause
Professor Hanuman Prasad and put their efforts and skills to organize this conference successfully. A special thank to our transportation and accommodation team. Without guys, this event was not possible. And at the end, I thank you all. Thank you very much. And at the last, I will conclude. देखना चाहते हो अगर पंखों की उड़ान को, तो और भी ऊंचा कर दो आसमान को. थैंक यू. सभासद समस्त गणमान्य प्रबुद्ध जन से राष्ट्रगान हेतु यथास्थान खड़े होने का ससम्मान अनुरोध. जनमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. मैं प्रोफेसर हनुमान प्रसाद हूँ और आज जो इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन की ये 104वीं कॉन्फ्रेंस एनुअल कॉन्फ्रेंस मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित हो रही है, उसका मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ. ये कॉन्फ्रेंस 27 से 29 दिसंबर 2030 तक चलेगी. इस कॉन्फ्रेंस का जो विषय रखा गया है वो भारत सेंट्रिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत सेंट्रिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोविड लेसन्स, कोविड से क्या लेसन्स लिए उस पर रखा गया है. और इसमें देश भर से तकरीबन 200 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं. आज जो इनॉग्रल सेरेमनी है, इस इनॉग्रल सेरेमनी में IEA के प्रेसिडेंट घनश्याम सिंह जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और उनके साथ GS राठौर साइंस कॉलेज के वो भी विराजमान हैं और वो भी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हैं. वक्ताओं के रूप में हमारे साथ आज शामिल हुए हैं AP पांडे साहब, श्री प्रकाश जी नोएडा से और भी अन्य अतिथि लोग यहाँ पधारे. इस कॉन्फ्रेंस में प्रमुखतः अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की जाएगी. ख़ास तौर पे यदि हम देखें तो इसमें कोविड से जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, उस नुकसान से उबरने के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ हों. इसके अतिरिक्त एग्रीकल्चर और डिजिटल सिस्टम्स को डाइजेस्ट करें और कैसे इकोनॉमी की ग्रोथ तीव्र गति से की जा सके ताकि हमारी इकोनॉमी विश्व में एक लीडिंग इकोनॉमी हो सके. इस पर चर्चा विभिन्न सेशंस में की जाएगी. इसमें 5 सत्र हमने विशेष तौर पे पेपर प्रेजेंटेशन के लिए रखे हैं, 4 पैनल डिस्कशन रखे हैं, 4 प्लेनरी सेशन रखे हैं. इस प्रकार 3 दिन का बिल्कुल कंप्लीट इकोनॉमी पे डिस्कशन होगा. थैंक यू. जय हिंद, जय मेवाड़. प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.